So today we'll discuss on the topic solubility. ठीक है, तो पहले एक मेजरली बात कर लेते हैं. Solubility of solid in liquid. Solid in liquid. I hope सबको पता है solubility means जब आपको एक specific amount like एक solute that means एक specific amount of solvent में आप कितना maximum solute add कर सकते हो, correct? So we can write as what? Solubility is the maximum amount of solute which can be dissolved in specific amount of solvent. That indicates solubility. So first we'll talk on solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. तो इसमें हम लोग दो पैरामीटर देखेंगे. एक तो what happened to solubility on change in temperature. Like consider करो if we increase in the temperature. If we increase the temperature, क्या लगता है? What happened to the solubility of solid in liquid? Yes, anyone? What happened to solubility of solid in liquid? Very good, Sanket. Very good. So generally, if I talk, it's increases. Very good. So we can say increase in temperature will increase the solubility of solid in liquid. But एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. If we take Na2SO4 dissolve in water. पता है ये जो एग्जांपल है यहाँ पे क्या होता है? This example is said to be exothermic. This example is said to be exothermic. अच्छा, अगर ये मतलब ये addition of Na2SO4 in water is an exothermic, तो यहाँ पे क्या होगा? If we increase the temperature, what happened to the solubility of Na2SO4 if we increase the temperature? अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, क्या वो डिसॉल्व होगा? Yes, anyone? No, maybe. Obviously, according to, if you remember, we have learned a chapter in the 11th standard called chemical equilibrium, where we have learned about Le-Chatelier principle. Now, Le-Chatelier principle क्या बोलता है? Le-Chatelier principle बोलता है कि अगर कोई process exothermic है, and in that case we increase the temperature, the process will shift in the backward direction. और हमको तो dissolve करना है, तो मतलब यहाँ पे dissolve नहीं होगा. So if there is exothermic process, we can say increase in temperature. तो ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ proper. So we can say in the case exothermic के केस में increase in temperature will decrease the solubility of solid in liquid. Will decrease the solubility of solid in liquid. तो ये जो आपने ऊपर लिखा है, this is only applicable when the solution or the process is endothermic, correct?
So in case of endothermic, increase in temperature will increase the solubility of solid in liquid. In case of exothermic, increase in temperature will decrease the solubility of solid in liquid. Is everyone clear? Okay, चलो. So next है pressure. If I talk about pressure, what happened to the solubility of solid in liquid if we increase the pressure? Yes, क्या लगता है? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? Solubility increases. Okay, चलो. So the answer, the solubility, देखते हैं, चलो वैनवी देखते हैं. Solubility of solid is not affected by pressure. अब बोलो सर ऐसा क्यों? प्रेशर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं चेंज हुआ? तो solubility of it is not affected by pressure, and the reason is since solid is highly incompressible. समझा सबको? क्यों चेंज कोई इफेक्ट नहीं होता? Is everyone clear? So there is no effect of change in pressure on solubility of solid in liquid. As solid are incompressible, there is no effect of change in pressure on the solubility of solid in liquid. Yes, is everyone clear? समझा सबको? चलो चलो, वैनवी clear? Okay, चलो next we'll say solubility of gas in liquid. गैस इन लिक्विड. ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग क्या क्या पैरामीटर पढ़ने वाले. फर्स्ट पैरामीटर है चेंज इन टेम्परेचर. क्या लगता है what happened to the solubility of gas in liquid on increasing temperature? तो अगर for example if I talk there is an increase in temperature, so what happened to solubility of gas in liquid? Very good, very good. So increase in temperature will decrease the solubility of gas in liquid. Very good. So next है addition of salt. अगर आप salt ऐड करो gas in liquid solution में क्या होगा? What happened to solubility? Solubility increases or decreases? आप एक काम करो, आप एक कोक ले लो. कोक में फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉल्ट डाल दो या कोई सॉल्यूट डालो, क्या होगा वहां पे?
करेक्ट करेक्ट, डिक्रीज होगा बिकॉज सॉल्ट उसके अंदर डिजोल्व होना चालू करेगा। आप ये तो ट्राई करो घर में, कोई भी कोक में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के चेक करो, चलिए गैस बाहर आना चालू हो जाएगा, गैस सीधा बाहर आएगा। So we can say addition of salt will decrease the solubility of gas in liquid। अच्छा, एक होता है अभी यहाँ पे प्रेशर। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो सबको पता है, इन केस ऑफ गैस एंड लिक्विड द प्रेशर एंड द solubility both are directly proportional। So increase in pressure will increase the solubility of gas in liquid। Clear? बट यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास एक नया सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। नाउ हेनरी लॉ इज रिलेटेड, इसने वो डिराइव किया है, जैसे हम यहाँ पे जो प्रेशर बात कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, गैस का खुद का प्रेशर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ it can be stated at constant temperature, at constant temperature the solubility of gas is directly proportional, यहाँ पे तो चेंज करता हूँ, in liquid solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas, to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। Clear? अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोक का कैन। कोक का कैन अगर आप कंसीडर करो तो उसमें आधा लिक्विड है, कुछ गैस लिक्विड के अंदर, कुछ गैस लिक्विड के बाहर, वो भी कंटेनर के अंदर ही। करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है एट दैट, अगर आप उसको शेक कर दो और आप उसको गैस को एस्केप होने मत दो, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे गैस की प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, द पार्शियल प्रेशर विल बी एट मैक्सिमम, एंड वो प्रेशर पे the solubility of gas in liquid will be maximum। So in that case we can say it's directly proportional। So यहाँ पे we can have equation S is directly proportional to P। So S stand for solubility, S stand for solubility, even P stand for the partial pressure। Correct? So we can have an equation S is equal to KH into P। तो ये इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है, वो भी हम लिख सकते हैं। The next statement is we can say the mole fraction I hope everyone knows mole fraction। The mole fraction of gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of gas
over the solution. Clear? तो ये भी स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं हेनरी लॉ के लिए. So equation can be used as partial pressure P is equal to KH into X. तो सबको पता है P stand for the partial pressure, X यहाँ पे stand करेगा मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन. बट अब KH क्या है? KH का मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट. हेनरी कांस्टेंट. क्लियर? Is everyone clear? So please note, Henry constant is not a universal constant. So it depends on nature of gas and temperature. Clear? तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, as it depend on the temperature, so KH increase with increase in temperature. Therefore, solubility, 1 minute, solubility of gas decreases. Clear? Is everyone clear? So by this we have done with the topic solubility. Okay. So next we'll start colligative property. So colligative property of dilute solution. अब क्या होता है ये colligative property? What is colligative property? Colligative property are the properties of solution which only depend on number of solute particles. That means concentration of solute particles, irrespective of its nature. We can write as the physical properties of solution which depend on relative number of solute particles or concentration of solute particles and that is what irrespective of its nature. अब नेचर दैट मीन्स वो आपका आयंस हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. That will depend only on the concentration or number of solute particles. Now, total we have 4 colligative properties. Number one is relative lowering of vapor pressure.
Second, elevation in boiling point. तो बेसिकली ये सब जो होता है ये सॉल्वेंट्स के लिए, सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है आफ्टर एडिंग सॉल्यूट. So lowering of vapor pressure of solvent, elevation in boiling point, elevation in boiling point of solvent. The third one is depression in freezing point, depression in freezing point of solvent. And the fourth one is osmotic pressure. Osmotic pressure. अगर आप symbol की बात करें तो symbol for osmotic pressure is given as pi. Depression in freezing point is given by delta Tf. Elevation in boiling point is given by delta Tb. And relative lowering of vapor pressure is given by symbol P naught minus P upon P naught, or it is given as delta P by P naught. Clear? Is everyone clear? So we'll start with the first one. Relative lowering of vapor pressure. So first of all, we'll study what is vapor pressure. What is vapor pressure? As this we have learned in the gaseous state, but to be एक बार देख लेते हैं. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapor of liquid on its surface when they are in equilibrium. It's called vapor pressure. Clear? This was the definition for the vapor pressure. अभी यहाँ पे कुछ symbols हैं. Like consider we have a vessel. ठीक है? Consider करो कि हमारे पास एक vessel है. ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. एंड ये हमारा सॉल्वेंट है. क्या है? सॉल्वेंट. ठीक है? So this is our solvent. So P naught. P naught stands for the vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. समझा सबको? P naught. P naught stands for vapor pressure of pure solvent. P naught stands for vapor pressure of pure solvent. ठीक है? Now, if we add a solute, after adding solute, what happened? It become solution.
आप सॉल्वेंट में जब सल्यूट ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सॉल्यूशन। प्लीज नोट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। व्हाट स्टैंड फॉर नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। So if we add a non-volatile solute in the solvent, it becomes solution. Now the symbol P is for the vapor pressure of solution. Is everyone clear? Your yes or no? P not stand for vapor pressure of pure solvent. P stand for vapor pressure of solution. तो यहाँ पे टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। So P naught vapor pressure of pure solvent, P stand for vapor pressure of solution. तो अब क्या करें? चलो, as we have seen the property name, it's relative lowering of vapor pressure. That means after adding a non-volatile solute, please note, I'm writing adding non-volatile solute and solvent decrease the vapor pressure. Okay, that means we can say that P naught is greater than P. Yes or no? P naught is greater than P. As we say, after adding solute, vapor pressure decreases. That means we can say that P naught is greater than P. P naught का मतलब क्या होता है? Vapor pressure of pure solvent, and P stand for vapor pressure of solution. So now P naught minus P. P naught minus P is called as lowering of vapor pressure. P naught minus P is lowering of vapor pressure, and P naught minus P upon P naught is called as relative lowering of vapor pressure. Is everyone clear? So please note, vapor pressure is due to only solvent molecule. And non-volatile solute does not contribute to vapor pressure. Clear? Next we'll see the Raoult's law. According to Raoult's law, the law states that the partial pressure of any component of a solution
is the product of vapor pressure of that pure component and mole fraction of the component in solution. Clear? तो ये स्टेटमेंट है, if I write the equation को जैसा मिलेगा P is equal to x1 into P naught. P is equal to x1 into P naught. यहाँ पे मैंने x1 क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे हमने क्लियरली बोला है कि वेपर प्रेस इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. इफ रिमेंबर मैंने आप लोगों को क्या बोला था, वन फॉर सॉल्वेंट, टू फॉर सॉल्यूट. करेक्ट. वन फॉर सॉल्वेंट, टू फॉर सॉल्यूट. इफ रिमेंबर, अगर आप लोग को याद है तो यस. तो यहाँ पे इन शॉर्ट वी कैन राइट एज, जो P है हमारा, P is the vapor pressure of solution. जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा था. P naught stands for the vapor pressure of pure solvent, and X1 stands for the mole fraction of solvent. Clear? Is everyone clear?